Hi all, good morning. Kindly confirm the audio. I hope I'm audible. We were talking about fronts, we'll continue with that. Kindly confirm the audio. So I hope I'm visible also now. Visible and audible. Kindly confirm the quality, audio video quality, so that we can start. Good morning to all. So this is our back-to-back classes. So today also we have a class. Tomorrow we have a doubt class and map drawing class. So students who have not been in foundation, who did not learn map drawing, who are not in GS also, so they can come. And if you are someone who has joined us late, so this is a doubt class. Good morning. Temperatures are coming. You can see Ekhari is 26 degree maximum. So above आपके temperatures, none of them is showing above 30 except for peninsular India where we are looking at Navi Mumbai is still 32. Air quality index is there. Okay, सब एकदम बढ़िया है. So we were talking about, let's come to this. अगर आपके यहाँ पर मौसम में कुछ बदलाव आया हो, anyone in the class from southern India, peninsular India, and you are experiencing the impact of cyclone Fengal, do let us know. Though Chennai is getting a flood over there, which looks like कि ये flood बना ही रहेगा. Yes or no? Okay, so no more questions. Friends की बात कर रहे, friends को ही continue करते हैं. So what are fronts? I told you that these are the fronts. If you remember this diagram, so why does it become slanting? It becomes slanting because of the variations in the wind that are there. Another thing you can think of is, well, when the air is stationary, think about it. If this cold air wants to move, if this cold air which is like this, there is this cold air wants to move into the warm region. Everyone, please pay attention. This is the warm air. Cold air wants to move in the warm region. Let us consider this position A, this position B, and this position C. Which one has the maximum friction? तो चंडीगढ़ में हाई क्लाउड दिख रहे हैं, तो आर दे फॉर्मिंग ड्यू टू फ्रंटोजेनेसिस? अरे ऐसे पगलाव नहीं कि फ्रंटोजेनेसिस. हाई क्लाउड का मतलब फ्रंटोजेनेसिस नहीं होता. हाई क्लाउड कन्वेक्शन से क्यों नहीं बनेगा? ये सुनो, फ्रंटोजेनेसिस के लिए फ्रंटल जोन भी तो होना चाहिए. अब जो भी बादल देखेगा वो सारा फ्रंटोजेनेसिस है. ए विल हैव द मैक्सिमम फ्रिक्शन. सो ये जो विंड है ये नीचे इतना चलेगा. ये सुनो, ट्रू. दिस विल हैव लेस फ्रिक्शन और नॉट लेस फ्रिक्शन. यहां पर ज्यादा चलेगा. ट्रू और नॉट?
So that's what we are talking about, that the wind also, the friction also varies. Friction also varies. So the maximum friction which is at the bottom, so what we will find is that the air moves slowly over here. Air moves slowly over here, friction is more, and the upper atmosphere it goes up. But remember, either warm air or cold air की बात हो रही, तो it will actually be the warm air which will be moving on top. We'll look at that, and we are, so you can see that there is friction, the warm air is not able to move, and as a result we get a slanting surface. We get a slanting polar surface. Is everyone okay? तो ये तो हुआ आपका फ्रंटोजेनेसिस. Front and frontogenesis. Is everyone with me on this? Everyone with me on this? Can I have a 1 minute break? Not feeling well. Slight dizziness is there. 1 minute break. Let me walk out of the room. Maybe 1 minute break. Everyone, I think it should be okay. I started feeling a little dizzy, so I don't know, maybe some fresh air needed. Let's come back to this. Yes, so we're talking about front, a linear boundary between two air masses as shown on a weather map. Front is actually the area where the frontal zone region touches the ground. We've already talked about this. Yes. So now let us move a little further. This is how a front is created. We were talking about, okay, we're talking about fronts. So let me make a world map for all of you.
Everyone with me on this? This is can I call this as maritime tropical, continental tropical, continental tropical, continental tropical? Yes, maritime tropical. Can I call this as continental polar, maritime polar, continental polar, maritime polar, maritime polar? Is everyone okay with this? Now, when this air, cold air, and this warm air, they collide with each other, what will be formed? A front will be formed. What will be formed? A front will be formed. Generally, the same thing will happen here also. And what will we call this front as? This will be called as Antarctic Arctic front. एंटार्क्टिक नहीं, इसको हम आर्कटिक मान लें, अटलांटिक, सॉरी, अटलांटिक. Why did I use Antarctic here? Atlantic, Arctic, Atlantic front. किस किस का कोलिजन हो रहा है? Who's colliding? CT and CP. Arctic, Atlantic front. Is everyone okay? अब कई बार क्या हो जाता है कि this warm air, this warm air, this warm air with cool air इधर भी हो जाता है. So this is also a front. What do we call this? This we will call as the Mediterranean front. What we call it? Mediterranean front. Do we get that? Similarly, we can have maritime tropical colliding with this. Remember, around 60-degree latitude, we have the frontal zones and they will shift with the season. What will we call them? What will we call them? We will call them the Arctic or Pacific Arctic front. True or not? So these are the zones where fronts are created. Zones where fronts are created. ये है आपका, और क्या है? ये है आपका, ये आपस में क्या कर रहे हैं? दे आर कोलाइडिंग. ठीक है. अब मुझे एक बात बताइए, किसी ने कहा चंडीगढ़ में बादल हैं, कौन सा फ्रंट है? तो चंडीगढ़ के बादल क्या फ्रंटल हैं? चंडीगढ़ के बादल क्या फ्रंटल है? हम तो एयर मास में है ना.
Fronts are created at the boundary of the air masses. And what do we have to protect us? हमारा एयर मास तो यहीं पे कंटेन्ड है. Do you get that? So this shows that people are just theoretically कोई भी हवा गर्म और ठंडा बनाएगा, फ्रंट बना लेगा. अरे fronts are formed, fronts are huge areas, those are huge linear. Air mass कितना होता है? Air mass are three dimensional surfaces expanding thousands of kilometers. So ये बनाना जरूरी है भाई. अब ये सवाल पूछ के चंडीगढ़ में सुबह बादल देखा और नया नया जो है फ्रंट जो है ज्ञान बताएगा तो गड़बड़ हो जाएगा. मैरीटाइम ट्रॉपिकल, इसको लिख दो कॉन्टिनेंटल पोलर, मैरीटाइम पोलर, ये जाके टकराएंगे. एंड हियर वी विल गेट आवर अंटार्कटिक पैसिफिक. यस और नो? पैसिफिक एंटार्क्टिक फ्रंट. अगेन रिक्वेस्टिंग भाई, ऐसे क्लास में डाउट के लिए डाउट मत बना दिया करें. थोड़ा तो दिमाग लगाएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे कि नहीं. सो द पर्सन हु टॉक्ड अबाउट चंडीगढ़ हैविंग फ्रंट, क्यों हाई क्लाउड है? हाई क्लाउड का मतलब फ्रंट से कैसे हो गया? डिड आई टीच यू क्लाउड्स विदाउट टीचिंग यू फ्रंट्स? डिड आई नॉट टीच यू क्लाउड्स विदाउट टीचिंग यू फ्रंट्स? यस. सो आपके फ्रंट्स अलग अलग जगह पे बन रहे हैं जहां कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस टकरा रहे हैं और यहां पर हमें मिल गया इस तरह से. स्पेशल केस है. एंड दीज फ्रंट्स आल्सो शिफ्ट नॉर्थ एंड साउथ. यही फ्रंट है जो नीचे को खिसक के आ जाता है मेडिटेरेनियन पे. एंड दिस इज व्हाट ब्रिंग्स विंटर रेन टू अस. दिस इज व्हाट ब्रिंग्स विंटर रेन टू अस. इज एवरीवन ओके विद दिस? तो पहला तो ये है कि फ्रंट्स को समझिए. दिस रीजन हमने आपको बताया था कि अराउंड दिस बेल्ट ऑफ 30 to 60, this is the frontal belt. Mid latitude बताया था ना, mid latitude where the polar cold ones will collide with that. इधर तो एयर मास ही है ना यार, इधर तो एयर मास है. ट्रू. This is the frontal belt and this is also the zone of convergence. Convergence हो रहा है ना. Frontogenesis happens where? Where convergence happens. Where convergence happens. So convergence से आता है. 30 पर तो क्या हो रहा है? 30 पर डाइवर्जेंस हो रहा है. Yes or no? So this is also maritime tropical, maritime tropical, continental tropical, continental tropical, continental tropical, और फिर आएगा इधर maritime polar. Nobody, despite telling in the class कि भाई एक बार बुक देखो चंडीगढ़ का बता के, तो यार ऐसा लगता है क्या पढ़ा रहे हो इन बच्चों को. Yes, this front can shift north and south. जनरली 45 डिग्री साउथ के आसपास ये फ्रंट रहता है. कहां पर रहता है? 45 डिग्री साउथ के आसपास दिस फ्रंट स्टेज. ये ऊपर नीचे हो सकता है. दिस कैन शिफ्ट अप एंड डाउन. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. देयर वाज अ स्टूडेंट हु रोट दैट फ्रंट्स आर फॉर्म्ड एट इक्वेटर. क्यों? इक्वेटर इज आल्सो कन्वर्जेंस जोन. सो इक्वेटर इज आल्सो कन्वर्जेंस जोन. इक्वेटर पर भी तो कन्वर्जेंस होती कि नहीं होती है? जल्दी बताओ. सो दिस स्टूडेंट रोट convergence is happening or not. So will a front form? What are the winds which are converging over here? The winds which are converging over here are northeast trade winds and southeast trades. Yes, and they converge at this zone called as ITCZ, intertropical convergence zone. We have already talked about this. So this student wrote कि भाई यहाँ पर भी फ्रंट बनता है. So again I want to tell you, for front to form, true preconditions for fronts. What are these two preconditions for fronts? Number one,
Number 1 is convergence. Very good. So first criteria तो met हो गया. Second criteria is thermal contrast. वो नहीं है, because both the airs are warm, both the airs are nearly comparable. So yes, there is convergence. Yes, there is air from the northern hemisphere and southern hemisphere. We are competing and meeting. But what is missing? The contrast is missing. But the problem was this book called Savindra Singh says कि एक तो frontal zone ये है and says another frontal zone is this. और कहीं से उसने कॉपी किया हुआ है. He is copied from some book. वो जमाने वही थे, इधर उधर से कॉपी करके कुछ भी लिख देते थे. तो दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली अ फ्रंटल जोन. यस, वीक फ्रंट माइट बी देयर बट टू डू इट. अब दिक्कत यह है कि सविन सिंह इज एन अथॉरिटी. नाम किताब लिख दिया तो क्या करे, किताब में लिख दिया तो क्या करे. सो इफ सम बुक सम टीचर ट्राइज टू इंप्रेस यू बाय टेलिंग यू बेटा यहां भी फ्रंट बनते हैं, किसी ने आपको नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूं. फ्रंटल वेदर यहाँ पे एसोसिएट नहीं होता. ये कन्वेक्टिव जोन है, कन्वेक्टिव रेन ज्यादा होती है, कन्वेक्टिव अपलिफ्टमेंट इज मोर. So this upliftment is not a mechanical upliftment, this is more of a thermal upliftment which is happening, but if it comes that is there. So दो चीजें बता दी. एक तो चंडीगढ़ में फ्रंट नहीं बन रहा है. चंडीगढ़ इज सिटी एटमोस्फियर, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एटमोस्फियर है हमारा, ठीक है. दैट्स एन एयर मास, वो एयर मास का सोर्स रीजन है. दीज आर ऑल सोर्स रीजन फ्रॉम विच एयर मासेस आर बीइंग क्रिएटेड. सोर्स रीजन के बीच में the zone where the convergence happens, the fight happens, that is called your frontal zone. So your mid latitude zones are your frontal zones. Is everyone clear with this? तो पहला तो ये होना चाहिए, so that we are not unnecessarily suddenly saying अच्छा सर सहारा में फ्रंट बन रहा है सर, बादल हो गए, और फिर कहीं पर भी बादल बनेगा तो आज से नया नाम कर दिया सर फ्रंट कहाँ बन रहा है. अरे बादल कितनी तरह से बनते, 3 तरह से बनते ना. यस और नो. There are 3 types of precipitation: convective, orographic and frontal. So every cloud that you see, इतना बड़ा जोग्राफर नहीं बनने की जरूरत है कि दिखा दो, और दिखाना है तो बाकी टीचर से पढ़ के दिखा लो, मेरी वाली बेइज्जती मत करवाना उधर बैठकर. So frontal zones भी बता दिए. Some names also, if they ask you where is frontogenesis happening, that is happening around this belt. 30 से भी मैं ऊपर ही कहता हूँ इसको, जनरली ऐसे 35 की ले लो और ये 65 तक में. They keep on shifting north and south. Is everyone okay? So ये मैप भी हो जाएगा. People who do not know how to draw the map, at least you should have written the name: Arctic Atlantic Front, Pacific Arctic Front. इसी तरह से दोनों इन्हीं में आएगा. इंडियन ओशन में आर्कटिक फ्रंट नहीं होता, और नीचे वालों में क्या आया, पैसिफिक अंटार्कटिक, अटलांटिक अंटार्कटिक एंड इंडियन अंटार्कटिक फ्रंट विल बी देयर. अदरवाइज आप इसको मिड लैटिट्यूड फ्रंट कह सकते हैं. दिस हैज अ वेरी गुड नेम, पोलर फ्रंट. इसको क्या कहा जाता है बच्चों? द फेमस नेम फॉर दिस इज पोलर फ्रंट. एवरीवन क्लियर? So polar front zone, and equator पर जो बनता है that is convergence, not strictly a front, but because a book has written that, and if you come across that and if you feel left out, if you feel सचिन सर ने हमें नहीं दिया था, तो आपको उसके लिए भी सूचना दे रहा हूँ कि वहाँ पर उसको समझना कैसे, how do we process that. So I want all my students, at least who have taken geography from KGS with me, should stop getting surprised. Get that? ये फालतू का सरप्राइज, चैन से सोना है तो जाग जाओ, सनसनी मचाने वाले बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे टीचर्स आपको मिलेंगे. आई एम सेइंग स्टिक टू वेरी वेरी स्टैंडर्ड थिंग्स. इफ देयर आर एक्सेप्शंस, वो एक्सेप्शंस रीजनल एक्सेप्शंस हो सकते हैं फॉर सम रीजन, एंड एक्सेप्शंस कैन नॉट बी रूल्स. यस और नो? तो एक्सेप्शन से ही जब आपको चमकाना हो तो कैसे चमकाऊंगा, कुछ ऐसा बताऊंगा ना जो आपने कभी नहीं सुना होगा, आपके होश उड़ा डालूंगा टाइप्स. सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट ट्रैप. हाँ जी, ये हमने बना दिया था. कोल्ड भी बनाया, ये भी. ये किसी ने पूछा था व्हाई इट इज गोइंग. आई होप दैट हैज बीन आंसर्ड. द मूवमेंट ऑफ फ्रंट्स. नाउ वी आर इनटू वेदर एसोसिएटेड विद अ फ्रंट.
ठीक है, तो हम एक फ्रंट की बात कर रहे हैं एवरीवन। सपोज, डोंट डू दिस, कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं। I'm talking about terminology. Suppose you are here. Suppose you are here and an air mass, a cold air is approaching you. You are in warm air. Right now, where are you? You are in warm air. So, in between, will a front be formed? Yes or no? ऐसे ही बनेगा, कुछ फ्रंट बनेगा कि नहीं बनेगा? और द फ्रंटल जोन, कैन आई राइट दिस एज फ्रंटल जोन? Is everyone okay? Now point A will be called as the leading edge of the air mass. एयर मास का लीडिंग एज ऑफ द एयर मास कहलाएगा ये. डू वी गेट दैट? लीडिंग एज मीन्स आगे का हिस्सा. लीडिंग एज. Is everyone okay? This is called the leading edge. Now this is the cold front. Cold is trying to enter. So if this is the cold front, can I say at the leading edge of the cold air, at the leading edge of the cold air, the warm air will begin to rise. Is everyone okay? Warm air will be forced to rise. Everyone, do we understand? Do we understand this? Now, this is the location of front. So this is frontal zone. This is the location. This area is called advance of front area. B is advance of the front. I am standing in advance of the front. Is everyone okay? Ahead or advance of the front. Is everyone okay? So I'll be using these words, ahead, advance. And can I say that point C at the front experiencing the passage of front. This is an air mass. This is an air mass. Warm is an air mass. This is the leading edge of the air mass, आगे का हिस्सा. This is ahead or advance of the front. Front के आगे, because front is moving this side. And what we are talking about, C is at the front when you are located at the front, or this is called the passage of the front. Everyone okay? So right now this person is located where? Where is this person located, everyone? Where is this person currently located? At the front, in the advance of the front, और ये जो पीछे वाला होगा D वाला, D is after passage या फिर retreat of front. यहां से तो front दूर जा रहा है ना, retreat. So ahead or advance of front. Is everyone okay? So now let us look at fronts one by one.
So first is cold front. Cold front. Let us look at the shape of the cold front. Shape and slope. Nearly vertical, slope is steep slope, 1:50 or 1:100. Get that? 1:50 or 1:100. What is the shape? Shape is like this. This is the cold air. Almost vertical. Get that? And the warm air which collides with it is forced to rise nearly vertically. It will cool and it will form what? It will form clouds. These clouds will produce rainfall. First draw this, then we'll talk about it. Whenever you are writing this, you should be able to make this first. Low pressure. Okay, everyone. So first of all, when cold air is moving, because in a cold front, what will we write? We will write that the cold air mass is the aggressor air mass. Cold air mass is the aggressor air mass. That's the first thing about the cold air. Now, cold air close to the ground moves slowly. Cold air close to the ground moves slowly. Denser भी है. So, cold, dense, cold, dense, heavy air acts as a wedge and forcibly uplifts warm air. So what is a wedge? Wedge क्या होता है? वेज क्या होता है? रिमेंबर देयर इज अ कोई कार है या बाइक है, स्लांट पे खड़ा है, स्लोप पे खड़ा है, उसके टायर के नीचे हम कुछ पत्थर का टुकड़ा लगाते हैं. यस,
Wedge is something like that which is wedging into it, नीचे से push कर रहा है. Is everyone okay with this? So cold dense air acts as a wedge and forcibly it is going and it is forcing it to rise up. Now tell me, if the air rises up, what kind of a pressure is there, high or low? Rising air, high pressure or low pressure? High pressure or low pressure? Creating a mechanical low pressure. बनेगा कि नहीं? Low pressure. Well, that's a low pressure is created when this is happening. Okay. The slope of the wedge is 1 is to 50 or 1 is to 100. That means for every 50 kilometer distance, the slope, the height is 1 kilometer. Okay. 150 to 1 this thing. So for 1 kilometer high, for every 50 to 100 kilometer distance. So if you travel 50 kilometers, the height of the front is 1 kilometer. If you travel 100 kilometers, it will be 2, 153, 204. Do we get that? How the slope is being measured? Through a scale of 1 is to 50 and 1 is to 100. Everyone okay? This is called a steep slope. This is called a steep slope. Normally इतना ज़्यादा नहीं height के साथ change नहीं होता है. Normally height के साथ इतना तेजी से change नहीं होता है. So this is a steep slope. This is a steep slope. Is everyone okay? Everyone okay? So now when this is happening, cold air mass, moves rapidly on ground. Despite friction, there will be friction, but it moves rapidly on ground and displaces and forces and displaces warm air decisively. Forced warm air at front passage, where front is passing. At front passage, what is happening? At front passage, warm air rises nearly vertically and violently, producing what? Narrow cloud or precipitation zone. What kind of a cloud? Cumulonimbus cloud. Cumulonimbus cloud. यहाँ पर कुछ आपके पास stratus can also be there, alto stratus, alto cumulus can be there, but mostly this is happening. Is everyone okay? Are we clear? So first we are talking about cold. Cold front. Everyone with me on this cold front? How do we write the weather associated with the cold front? How do we write it?
This is the cold front. Can you see cold air trying to wedge? Heavy precipitation. Where is the heavy precipitation going to happen? Only under these clouds. This is the cold front, this is the warm air, this is there. एंड इधर हमने कहा इस तरह के कुछ क्लाउड्स भी बन सकते हैं, ऊपर कुछ सिरस, वैसे वो कम ही बनते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत बनेगा. इधर नो क्लाउड्स, इधर नो क्लाउड्स. This will be called as the cold sector. This will be the warm sector. Warm sector में did I make these clouds, chotu clouds? Yes, altostratus, altocumulus, but the real one that is formed is this. Everyone okay? So pehla to warm sector, cold sector, and can you see wind means this is the direction of the flow of the whole system. So in this the aggressor is cold, so cold air mass. Do we appreciate the steep slope? तो सभी एयर मास का स्टीप स्लोप होता होगा? नहीं, सभी एयर मास का स्टीप स्लोप नहीं होता है. आई वांट टू शो यू हाउ द स्लोप ऑफ अ वार्म एयर फ्रंट लुक्स लाइक. कैन यू सी वार्म एयर फ्रंट इज दिस. वार्म एयर फ्रंट का जेंटल स्लोप है. कैन यू सी जेंटल स्लोप? दिस विल बी 1:100 or 1:200. This is a gentle slope. So there is a difference between a gentle and a steep slope. So cold front is generally associated with a very, very steep slope. Everyone clear? Weather associated with a cold front. Now when we are talking about this, we generally see the weather in three categories. Before passage, that means in advance. During passage, and then after passage. Get that? So temperature is warm before passage. During passage, there is a sharp drop. After passage is cold. Winds are south to southwest. Winds become variable and gusty. Winds become west to northwest. Do we get that? Precipitation, none or showers. Precipitation at passage, thunder, and then clearing. Clouds, no clouds, cumulonimbus, none cumulus in summer. Pressure falling, rising, rising. Pressure falling, rising, rising. Okay? And then humidity high, particularly in summer, before passage, dropping low, particularly in winter. तो ऐसा पढ़ा दिया जाता है, ऐसा बुक्स में डाल दिया जाता है. एंड स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मग इट अप कि एग्जाम में आएगा. कितने लोगों को समझ आया? कुछ समझ आया कि नहीं आया? मुझे बिल्कुल ये समझ में नहीं आता है. सर क्लाउड, कोल्ड फ्रंट ड्राइव द क्लाउड्स. रोहित सिंह, आपको कुछ नहीं पता है. क्लाउड तो क्लाउड है, उसको कोल्ड फ्रंट से ड्राइव क्या करना है? फ्रंट्स पर क्लाउड बनेंगे, तो वो तो वार्म पर भी बनेंगे. क्वेश्चन जो पूछते हैं उसका कोई समझ, कोई सोच, कोई कॉन्टेक्स्ट तो होगा कि ऐसे ही पूछ रहे हो. कोल्ड फ्रंट ड्राइव द क्लाउड. अरे भाई, टाइप ऑफ क्लाउड विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फ्रंट. बट क्लाउड तो मैंने कहा बिना फ्रंट के भी बनता है. एवरीवन क्या करना है? ऐसा लिखा होता है. ये वेदर एसोसिएटेड विद कोल्ड फ्रंट होता है, वेदर एसोसिएटेड विद वार्म फ्रंट होता है. हाउ डू यू मेमोराइज दिस? Some quick way of memorizing this. एग्जाम में पूछेगा वेदर एसोसिएटेड. मेनी स्टूडेंट्स आई मीट एंड दे आर रियली अफ्रेड कि सर वेदर एसोसिएटेड में क्या लिखना है, क्या याद करें. विंड को बोलता है बैकिंग ऑफ विंड, वियरिंग ऑफ विंड, न जाने क्या क्या नाम बताते हैं. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. व्हाट विंड्स
थ्रू डायग्राम, विच डायग्राम? कौन सा डायग्राम करेगा? ऑन मैप सर, मैप में बता दो कैसे याद हो जाएगा। हम ओके विद मैप से भी अगर कोई मदद कर दे तो आई एम फाइन। क्विकली क्विकली। जल्दी बताओ याद कैसे करोगे? टर्मिनोलॉजी अभी आपने बताया था सर उससे। So everyone, this becomes very very difficult. So सबसे पहले it becomes very easy for us if we take it like this. कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। ये cold air है, cold air is approaching. This is the cold front. So cold air is approaching. You are standing. Okay. So ये front आपके पास आ रहा है. This front is coming towards you. Can you imagine that? Can you imagine that? Can you imagine this front is coming towards you? Front means an invisible cold air is coming towards you. So since you are in this, so can I say ahead of front, ahead or advance of front? This is where you are. अभी आपको टेम्परेचर कैसा लग रहा होगा जल्दी से बताओ. You will give me the answer. How would the temperature be? टेम्परेचर बताइए. यू विल गिव मी द आंसर. सब आप ही बता देंगे. टेम्परेचर कैसा होगा? तो वार्म होगा. वेरी गुड. वार्म. ओके. ह्यूमिडिटी कैसा होगा? कुछ ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड कैसा होगा? गर्म में ह्यूमिडिटी वार्म होता है मोर, सो ह्यूमिडिटी इज देयर. अब ये लिख देते, अभिनव लिख रहा है हाई ह्यूमिडिटी. कैसे बोल रहे हो हाई ह्यूमिडिटी? अगर ये लैंड हुआ तो ये वो वाले हैं जो कोई दिमाग नहीं लगाएंगे. वार्म एयर का मतलब हाई ह्यूमिडिटी कैसे होता है? इफ यू आर ऑन लैंड. ये सुनो आप. सी प्रभात हैज यूज्ड द वर्ड मॉइस्ट होगा. मॉइस्ट होगा. हाई ह्यूमिडिटी तो वाटर पे होगा ना. इफ इट इज अ कॉन्टिनेंटल लोकेशन, इफ इट इज इमेजिन इफ इट इज अ सीपी एयर मास, साइबेरिया पे है, आपको बताया सीपी एयर मास हो सकता है, वो वार्म रीजन है, उस पर आ रहा है. सो इट कैन बी डिफरेंट थिंग्स. ट्रू और नॉट, कुछ भी हो सकता है. आई एम सेइंग दिस इज अ वार्मर एरिया, so moist is there, it is moist, so moisture will be higher. I agree because land and water पे depend करेगा. Can I say depends on? Depends on surface. कैसे क्लाउड्स बनाए थे हमने कुछ? मे बी सम क्यूमुलस, स्ट्रेटो क्यूमुलस, ऐसा बनाया था कुछ. यही दिखाई देगा. प्रेसिपिटेशन लो प्रेसिपिटेशन. ऐसा नहीं है कि ये बहुत आग लग रही है. वार्म फ्रंट है मतलब इट्स जस्ट दैट, बहुत ज्यादा नहीं है. इज एवरीवन ओके? प्रेशर कैसा होगा? हाउ वुड द प्रेशर बी? हाउ वुड द प्रेशर बी?
Pressure will be low. Pressure will be low. Why? Because warm air has low pressure. It's okay. Warm air has low pressure. I'm okay with this. Low and falling as front approaches. Because सबसे लो कहां पर है तो, लेकिन इधर भी तो लो है. सपोज इधर योर प्रेशर इज 1000 मिलीबार, इधर योर प्रेशर इज 1020 मिलीबार. पॉसिबल नो? ये कितना हो गया? सबसे लो होगा 980 होने वाला है. सो इफ यू आर लो प्रेशर एंड एज द फ्रंट इज अप्रोचिंग, इज इट फॉलिंग फर्दर और नॉट? ट्रू. हो गया. विंड विल बी माइल्ड विंड. विंड जो करना है कर लो. विंड में अभी मैं आपको डालना ही नहीं चाहता हूं. अब हम इसको देखते हैं. बिफोर पैसेज वेदर एसोसिएटेड विद वार्म फ्रंट. नहीं भाई, कोल बताओ. विद बिफोर पैसेज वार्म है कि नहीं? वार्म है ना. उसके बाद प्रेसिपिटेशन नन और शावर, थोड़ा बहुत अगर होगा तो होगा. क्लाउड्स आर नन, क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस. प्रेशर इज फॉलिंग, प्रेशर इज फॉलिंग. देन राइजिंग, वो भी बता दूंगा कैसे राइज होने वाला. ह्यूमिडिटी हाई पर्टिकुलरली इन समर. तो मैंने आपको बोल दिया हाई या मॉइस्ट हमने लिख दिया. डिपेंड्स ऑन द सरफेस एंड सीजन भी कर दे. डिपेंड्स ऑन द सरफेस एंड सीजन करें. आगे बढ़े. डिपेंड्स ऑन सीजन एंड सरफेस. याद तो नहीं करना पड़ेगा. डू यू हैव टू मेमोराइज इट और कैन इट बी डन? यू आर इन द एडवांस. नाउ यू आर एट पैसेज. एट पैसेज. अब फ्रंट इज पासिंग यू. ये इधर था. दिस कम्स एंड इट हैज कम टू यू. तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ. व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर? व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर एट पैसेज? इधर तो वार्म था, इधर तो वार्म था. Say for example, this was around 28 degrees Celsius and this is around 8 degrees Celsius. क्या होगा? Pressure will fall. Fall in temperature. Depend करेगा what is the temperature contrast. If the temperature contrast is huge, rapid fall. If the temperature contrast is not that huge, then the fall may be a gentle fall. But temperature गिरेगा कि नहीं गिरेगा? Yes or no? What will happen to the humidity and moisture? Humidity and moisture. अरे सर ये तो कमाल होता है. इधर तो फुल ड्रामा होने वाला है. ये आ गया पूरा का पूरा. बताओ आगे आंसर. What will happen to the humidity? Humidity increases. Heavy precipitation, thunder, lightning. Heavy precipitation, thunder, lightning, cumulonimbus cloud. Pressure, what will happen? Pressure will happen, fall to lowest and then begins to rise. इधर तो बढ़ने लगेगा ना बच्चों. इधर क्या है? इधर क्या है? कोल्ड है. तो इधर प्रेशर बढ़ने लगेगा ना. Chitralekha sir, I have a question. Sorry for interrupting. I've joined the course now. So how do I schedule my timetable to cope up? Beta 3 days classes are there. So you have 3 days gap also. You can do that in the gap.
please make sure you do the classes, and on weekend you do 2 classes. That's how you do that. Okay, so everyone, ये बताओ clear था या difficult था? At the passage also, people are trying to mug it up. I just said that as I am going, as the front passes over me, it will bring a lot of rain. It will bring a lot of rain. Will it increase the humidity? Yes. What kind of a rain is there? Rain is heavy rain, short duration rain. हेवी रेन है, शॉर्ट ड्यूरेशन रेन है, और प्रेशर क्या होगा? 1000 से इट विल कम टू 980, 980 टच करेगा, एंड मोमेंट द पैसेज इज हैपनिंग एंड योर कोल्ड वन इज कमिंग, सो विल इट स्टार्ट इंक्रीजिंग, क्योंकि अब उसको 1020 पे जाना है, इट हैज टू गो टू 1020. यस, अब खत्म हो गया भाई, बाय बाय. आफ्टर passage in retreat, now the front is going away from you, front is going away from you. जल्दी से बताओ, अब आप कहां पर आ गए, कौन से एयर मास में? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? what will happen to the temperature? पहले वार्म था, then it fell, and now what is the temperature? cool or cold? Depends on air mass and season. अब तो ठंडे में आ गए आप नहीं आए. द एयर मास हैज पास्ड ओवर यू, इट हैज पास्ड ओवर यू. व्हाट विल हैपन टू द ह्यूमिडिटी? जल्दी से बताओ, ह्यूमिडिटी कैसी होगी? ह्यूमिडिटी कैसी होती कोल्ड कूल एयर में? कोल्ड एयर मास, सर ड्राई होता है सर, यू टोल्ड अस इसका तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इज लो, सो व्हाट विल आई से? relatively drier, low humidity, clear sky, no clouds. Yes, what will happen to the pressure? Pressure वहां पे फ्रंट पे touch the low and then it began to rise. If somebody asks you to write the weather, do you have to mug it up? Now do you have to mug it up? यहां पर आ जाएंगी. वेरिएबल विंड्स, कंफ्यूज्ड विंड्स है ये, और लिख दो बस. यहां से राइज करना था ना, बिगिन टू राइजेस, राइजेस एंड इवेंचुअली रीचेस हाई प्रेशर, एंटी साइक्लोनिक. एंटी साइक्लोनिक स्टेबल कंडीशन कम्स. अब यही चीज बुक से जो है टीचर कहता है मुझे सब पता है, अब इसे रटना शुरू करो. टेम्परेचर बता देगा, विंड बताएगा, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, सब तो कर दिया हमने. प्रेशर हमें पता चल गया, प्रेशर इज चेंजिंग, क्लाउड्स पता चल गया, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी. विंड्स को भी आप छोड़ दो, विंड साउथ साउथ वेस्ट है, उससे वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड द वियरिंग ऑफ विंड्स हैपन. A veering and backing of winds is something very technical which is meteorological. You don't have to get that. Veering of wind is change in the direction of wind clockwise, and backing of wind is called change in direction of wind anti-clockwise. अब उसमें वो साइक्लोन में जब हम करते हैं तब we'll get to know more, but अभी आप इतना ही कर दीजिए. The wind is variable at the front. That's it. Advance of front, retreat of front, at passage, and the rainy belt. Is the rainy belt wider or narrow? This is the narrow rainy belt. Narrow rain belt. Narrow rain belt. अब ऐसे ही हमें क्या करना है, कोल्ड फ्रंट के बाद एक वार्म फ्रंट कर लेते हैं. अच्छा एक और चीज बताऊं, आई शोड यू अ वीडियो, ये
ये दिखाई दे रहा है वो पूरा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है। ये उसका जो लाइन होता है ना, दिस लाइन, द एज ऑफ द क्लाउड्स विच यू कैन सी, दिस इज कॉल्ड द स्क्वॉल लाइन। द लिमिट वेयर इट इज स्टार्टिंग, दिस इज कॉल्ड द स्क्वॉल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वॉल लाइन। क्योंकि आप तो इधर हो ना, आपको क्या दिखाई देगा? आपको क्लाउड्स ऐसे दिखाई देंगे ना, द बेस ऑफ द क्लाउड। दिस इज कॉल्ड द, अभी दिखाया पिक्चर में कैसा लगेगा? स्क्वॉल लाइन इज अप्रोचिंग यू, so you can see the squall line approaching you, but the squall line, the clouds will come only close to this. Okay, so those are not visible here. ये squall line जब आएगी when you are very close to this thing, probably in a range of 50 kilometers, so squall line comes here. Squall line is where the clouds, the edge of the approaching cloud is there. That is technically called as the squall line. वहां पर ही स्क्वॉली वेदर शुरू होगा. व्हाट इज स्क्वॉल? सडन इंक्रीज इन द, sudden increase in the wind velocity. Why would the wind velocity increase? Because आपका low pressure है ना, low pressure है. So can I say wind? If I'm talking about wind, wind is gentle to moderate. Can I say here the wind is low wind? Stable, no? Low wind. Variable wind? Gusts occasionally. What is gust? Gust means sudden increase in the velocity of wind. And why would there sudden increase be? Because lowest pressure है ना, remember low pressure will suck in the thing, so that is why it will happen. Everyone okay? Wind भी आपको जो general concept है वो बता दिया. Backing and veering I am not telling you. Backing and veering is on the technical side, not for you. It's more on meteorology. कर सकते हैं? स्क्वॉली वेदर, स्क्वॉल क्या होता है वो भी बता दिया. वार्म सेक्टर, कोल्ड सेक्टर, दैट इज ऑल्सो देयर. Get that? अच्छा, will every cold front be the same? My question to all of you is, will every cold front be the same? ये जो मैंने weather associated बताया, will every cold front be the same? Weather associated. Everyone, I want you to imagine this is Canadian air. Canadian air entering Pacific Ocean. Okay? Or this is European air entering Atlantic Ocean. CP of Europe entering Atlantic Ocean. नीचे पानी है. Will it give something or not? Suppose there is a warm current, will it give more moisture to these clouds or not? And other example can be, well, this is Siberian coming over Europe. So that's less temperature contrast, less moisture. So if this air moves over, warm water, if this air moves over, imagine mountainous track. So mountain pe kya hoga? The air will have more friction, so there will be rising also. So many things can happen, but this is an ideal or a broad thing to understand. आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाता है? कूल हो जाता है, क्लियर स्काई हो जाता है, लो ह्यूमिडिटी, बोथ specific and relative humidity will reduce. They will reduce. That's what is going to happen. Is everyone with me on this? Everyone with me on this? Yes or no? So ये हुआ आपका कोल्ड फ्रंट. लिखे वार्म फ्रंट. इतनी तो दोस्ती हो जानी चाहिए फ्रंट से यार. एंड एवरीवन, डज इंडिया हैव फ्रंटल वेदर? क्या इंडिया में फ्रंटल वेदर है?
इंडिया में फ्रंटल वेदर नॉर्मली नहीं होता है बिकॉज इंडिया इज इन एयर मास, बट यस बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग देयर कैन बी समथिंग व्हेन वी गेट इन विंटर्स फ्रंटल साइक्लोन्स। अदरवाइज इंडिया में नॉर्मली, अब आप कहो कि चेन्नई में सर क्लाउड्स है, तो चेन्नई में कौन सा वाला एयर मास है? चेन्नई में सीटी और एम टी एयर मास है, एम टी एयर मास एंटरिंग चेन्नई, तो एम टी ही ड्रामा कर रहा है उधर। तो हमारे यहाँ द होल एरिया इज ट्रॉपिकल, सो इतना एयर मास में डिफरेंस नहीं है, एंड विदाउट कॉन्ट्रास्ट यू डोंट हैव फ्रंट्स, बट दैट इज कन्वेक्टिव इंस्टेबिलिटी दैट इज एक्टिंग ऑन देयर। वार्म फ्रंट पे आते हैं। सो व्हाट इज वार्म फ्रंट? प्लीज राइट डाउन। वार्म फ्रंट का एक डायग्राम बनाए, वार्म फ्रंट का एक डायग्राम बनाते, ध्यान दीजिएगा आप पहले डायग्राम, एंड डायग्राम विल मेक आवर लाइफ मच इजियर। ओके, this is cold air, this is warm air. This time warm air is the aggressor. Warm air is the aggressor. Warm air wants the cold air to move. The cold air was standing like this. The cold air was standing like this, yes or no? So the warm air said, cold, cold, run away, I am pushing you. Cold said, मैं बताऊं, मैं नहीं हिल रहा हूं, I don't move. उसने कहा प्लीज यार, उसने कहा वॉट एवर आई डोंट मूव. So the warm air tried to push here, then tried to push here, then tried to push here. कोल्ड ने कहा देख भाई मैं नहीं जा रहा हूं कहीं पर भी, आई विल एट मोस्ट बेंड अ लिटिल बिट. सो द स्लोप इज लाइक दिस. The slope of a cold front is a warm front is not that it is trying to enter. So this is a gentle slope. Warm air tries to. Warm air is the aggressor. Warm air is the aggressor. Warm air tries to push the cold air wedge. It tries to push the cold air wedge. Wedge is still there. You can see the wedge is there, but unable to do so. Forced to rise up. Yes. What is the slope? Shape slanting, slope gentle, 1:100 or 1:200. Yes. Warm front moves slowly on ground. Air aloft moves faster and tries to intrude in cold air from above. ठीक है. So first of all, remember we wrote cold air moves rapidly on ground. This one moves slowly on ground. इधर क्या लिखा था? Moves rapidly on ground. It displaces the warm air decisively. उसको लात मार के भगा देता है. Yes or no? ये cold air is like elephant and these are like barking dogs. एकदम लात मारेगा, हटो 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 हटो. It goes like that. It goes like that.
बट दिस वन, ए प्लीज थोड़ा सा जगह देना, थोड़ा जगह देना, नहीं, नॉट अलाउड। बहुत मुश्किल से उसको पुश करता है। इट सेज मैं हो नहीं रहा हूं, मैं थोड़ा सा बेंड हो जाऊंगा, दैट्स ओके। नाउ दीज वंस विच आर ट्राइंग टू एंटर, थिंक अबाउट दिस, ये जो घुसेगा इधर, सो विल इट नॉट, एवरीवन, विल इट नॉट कॉन्डेंस? क्लाउड बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें घुसेगा तो ये क्लाउड बनेगा या नहीं बनेगा? और ऊपर जाएगा तो यहां पर जहां भी ये घुस पा रहा है, what are these clouds? Cirrus, cirrostratus, altostratus, altocumulus, stratus, stratocumulus. Yes, सब बारिश भी देंगे, कुछ कुछ बारिश भी देंगे. Cirrus does not give बारिश. A battery of clouds, a battery of clouds in layered sequence is formed over a broad area. सीक्वेंस क्या होगी? टॉप पे क्या है? सिरस, सीरोस्ट्रेटस, ऑल्टोस्ट्रेटस, ऑल्टो क्यूमुलस, स्ट्रेटो क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस, ये सब लाइन लगा के बनेंगे. एंड ओवर अ वाइड एरिया, वाइड एरिया. सो इज द डिस्ट्रीब्यूशन, is the distribution spread out? Is the distribution spread out or not? True? Everyone with me? So how different is this compared to that? अब ये टीचर जो है, जो डायग्राम नहीं बनवाते हैं, वो बस अपने नोट्स देते हैं या फिर फोटोकॉपी बेचते हैं. दोनों अलग बन रहे भाई. इधर एकदम से लात मार के ऊपर भेज रहा है, स्ट्रेट अवे, ऑलमोस्ट वर्टिकल, थोड़े से रीजन में दिखाई देगा. इधर क्या है? 1000 किलोमीटर इन एडवांस ऑफ द फ्रंट. फ्रंट तो यहां पर है ना. वेयर इज द फ्रंट? दिस इज पैसेज ऑफ फ्रंट. दिस इज पैसेज ऑफ फ्रंट. दिस इज प्रोबेबली इधर. दिस इज वेयर यू आर स्टैंडिंग. दिस इज एडवांस ऑफ फ्रंट. हाउ मच? 1000 किलोमीटर अहेड. यू आर स्टैंडिंग 1000 किलोमीटर अहेड. आपको अभी से क्लाउड्स दिखने लगेंगे. दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? एंड ये क्या होगा? आफ्टर पैसेज एंड एडवांस, यू विल स्टार्ट सीइंग सीरियस क्लाउड फार अवे, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स. आपको ये 1000 किलोमीटर पर आपको ये दिखाई दे रहा है. ये कहां पर है? दिस इज प्रोबेबली 300 किलोमीटर पर आपके पास क्यूमुलस चल रहा है. और ये कितने में मामला खत्म हो गया? प्रोबेबली 50 किलोमीटर्स में मामला खत्म. 50 किलोमीटर्स आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक till the squall line comes to you. You will not be able to see squall line. Squall line will be just 50 kilometers away from the real front. So this is the cloud tells you where the front is. इसमें तो क्लाउड पूरा आएगा सीक्वेंस में. पहले आपको क्या दिखाई देना शुरू होगा? इधर से दूर से पहले ये दिखाई देगा. फिर आप देखो अच्छा ये भी आया, ये भी आया. बिकॉज दिस होल सिस्टम इज गोइंग टू ट्रेवल ऑन यू. नो, रिमेंबर, इमेजिन दिस होल सिस्टम इज गोइंग टू ट्रेवल ऑन यू. सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? सिरस क्यूमुलोनिम्बस. यहीं पर हेलो भी बनेगा. बनेगा कि नहीं बनेगा? हेलो ये वाले क्लाउड्स प्रोड्यूस करेंगे. एवरीवन देखते ही आपको, if they ask you a difference between, what are these, if they ask you a difference between warm front and cold front, डायग्राम से ही पता चल जाएगा कि नहीं?
डायग्राम बनाओ, आफ्टर पैसेज, बिफोर पैसेज, एडवांस, एट पैसेज, सब बनाओ, क्या टेंशन है? ये आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। ट्राई करेंगे? लेट अस ट्राई। हाउ इज द टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, विंड्स। बता दो वेदर एसोसिएटेड। तो एडवांस में क्या दिखाओगे? प्रेसिपिटेशन एंड क्लाउड्स कर देते हैं, विंड्स बाद में लिखते हैं। एडवांस में कैसा है? हाउ इज द टेम्परेचर इन एडवांस? यू आर स्टैंडिंग हेयर इन एडवांस। सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन एडवांस का क्या मतलब है। अरे यार, आइदर यू आर स्टैंडिंग हेयर और यू कैन ऑल्सो इमेजिन योर सेल्फ टू बी एन एयरक्राफ्ट. You are the pilot of this plane. This plane is flying into, this plane is going to fly into this whole thing. So it will come at point A, then point B, and then point C. इस पे वेदर बताना है ABC. सर ये तो कोल्ड होगा, कूल एंड कोल्ड, वेरी गुड, कूल और कोल्ड. द प्रेशर विल बी हाई हेयर, प्रेशर इज हाई. कितना होता है जनरली? 1020 मिलीबार, 990 एंड 1000. व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर? जल्दी बता दो, प्रेशर आप ही बता दोगे. इन द कोल्ड एयर हाउ इज द प्रेशर? हाउ इज द प्रेशर? हाई प्रेशर, वेरी गुड. हाई प्रेशर falls as front approaches. So जनरली हाई प्रेशर है, जैसे जैसे फ्रंट आएगा गिरेगा कि नहीं. इधर 1020 इधर 990 है. सो एज यू आर इन दिस 1020, 1015, 1010, 1005, 1990, ऐसे ही तो आएगा. थिंक अबाउट इट. यस, इज एवरीवन ओके इन एडवांस? प्रेसिपिटेशन, क्लाउड्स. क्लाउड्स देखते पहले. कैन आई से बैटरी ऑफ क्लाउड्स? First, what will we see? Cirrus or cirrocumulus? Cirrus or cirrocumulus, very very important. Thousands of kilometers हो जाएगा. Cirrus, cirrocumulus heralds the approach. 1000 किलोमीटर बिफोर. उसके बाद आप सीक्वेंस, पूरा सीक्वेंस है, एंड देन द सीक्वेंस ऑफ क्लाउड्स. Precipitation. Now these clouds are not cumulonimbus. So precipitation is low to moderate, spread over a wide region. Low to moderate, spread over a wide region. I'm very sure some of you have already done your coachings from various institutes. आज आप देख रहे होगे यार, ये तो खुद ही लिखा जा सकता है, ये तो दिख रहा है. We don't have to mug it up. Low to moderate because there is no cumulonimbus cloud. Yes, that is there. And can I say it is spread over a long duration? So humidity the air will be moist. Air will become moist or not? So humidity will keep on increasing as you approach the front. Will it increase? So humidity can be there. Humidity will increase.
डन, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया. एट पैसेज बताओ, what will happen to at passage? So now the transition is changing, so can I say rises, rise in temperature? Falls, this was falling, no? Falls to lowest. Will it fall to the lowest? The clouds, generally what are these? Strato nimbo, stratus clouds, नीचे वाले clouds है ना, low clouds और nimbus clouds. Moderate rain, humidity rises, humidity rises. ठीक है, humidity rises. Can I say 300 kilometers in advance से ही, यहाँ से 300 kilometers से it is rising. Somebody asks you to write a short note on warm front, explain what is happening. Do you have it with you or not? Now, cold front and warm front. Cold front and warm front. Abhishek Kumar Pandey, how many lectures remain in climatology? So everyone, generally a lecture is taken, normal offline classes, we take a lecture for 3 hours. Get that? Lecture is for 3 hours. Offline class students are different level and they will do whatever they want to. उनका पता चल जाता है. ऑनलाइन में स्टूडेंट लेट ज्वाइन कर रहा है, क्या ज्वाइन कर रहा है, क्लास की स्पीड क्या रखनी है, दैट्स ऑल्सो डिफरेंट. यस और नो? एंड द क्लास इज जनरली 2 hours और लेस देन 2 hours हो रहा है. सो शुड आई एवरीवन, वुड यू वांट अभिषेक कुमार पांडे का आंसर अभी करना शुरू करें? लेट अस स्टॉप, लेट्स डू द मैथमेटिक्स. हाउ मेनी टॉपिक्स आर लेफ्ट? It will, how much time will it take, and divide it and do that. Means I don't understand why this person is talking about how many lecture remain in climatology. What benefit is he going to get out of it? और मैं class रोक सकता हूँ. We can start doing that. We can start doing that. I'm stopping the class. The class is over now. Let us do, we have to do jet streams. We have to do cyclone, temperate, tropical. Then we have to do classification. Classification is Köppen, Thornthwaite, Trevartha. Then applied climatology, paleoclimatology. Cyclone generally 3 hour classes में I take one class in this, 3 hour class में 2 classes in this. इसको 3 में 3 hour की 3 classes चाहिए, तो 2 hours की कितनी चाहिए होंगी? 3 3 9, 8 hours. So 4.5 class. Should I do that? Now then what happens is, it comes on the teacher. The teacher is not fair. Teacher does not give us the space to ask us questions. अब बताइए, क्वेश्चन का भी तो कुछ वो होना चाहिए ना यार. आपका टीचर इज राइट इन द मिडल ऑफ अ कॉन्सेप्ट. व्हाट क्वेश्चन कम्स टू अभिषेक इज, सर ये कितनी क्लास और बची हुई है? एंड दीज आर द पीपल हु ब्रिंग अ बैड नेम टू द टीचर. हो सकता है ये कोचिंग भी कर चुके हैं, इनके पास नोट्स भी हैं, अब भी एवरी वन रियलाइज, अरे यार ये अच्छा समझ में आ गया, बट दे विल डू इट. कि अभी कैलकुलेट करके बताओ, मैकेनिकल बताओ, हमें ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं, हमने पैसा दिया ये दो. यार मत करो यार ये. सो एवरीवन, क्लास स्टार्टेड, माय हेड स्टार्टेड स्पिनिंग. मुझे सब गोल गोल तेज घूमता दिखने लगा. ये सुनो, I said that difficult. I might have to stop the class. I said, come on, yaar, they'll miss their class. It's important. We are in the topic. I took myself, I told myself, nahi yaar,
let me strengthen my wife asked, my son asked what happened, I said don't worry, let me take a walk and whatever, let me do this class. किस लिए कर रहा हूं? ये बताने के लिए कि अभिषेक पूछेगा कि कितने में खत्म करोगे. बढ़िया यार. एंड इफ द टीचर क्वेश्चंस दिस, यार ये टीचर जो है हमें फ्रीडम नहीं दे रहा है. टीचर हमारे क्वेश्चंस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा. आर यू इवन रिस्पेक्टिंग द प्रोसेस? कल ही बताया था कि इंटेंशन ये है कि हम बेसिक क्लाइमेटोलॉजी यहाँ पे खत्म कर देंगे. आफ्टर दैट वी गेट इनटू बेसिक पर्सपेक्टिव्स. सो हैव अ रिक्वेस्ट यार, कम ऑन. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ आपने कोचिंग लिया है फॉर कलेक्टिंग दीज नोट्स, कर लो यार जो है. आपको प्रॉब्ली many of the people who have joined this, they are teachers also. कई तो टीचर भी हैं, उनको सिर्फ मैथमेटिक्स करना है. कहाँ हम चल रहे हैं और कहाँ पर वो है, साहब ये बता दो. और क्लास के बीच में ये दिखाता है यार सीरियसनेस ऑफ द क्लास. सो भाई, it's been a long time. We know that not everyone is serious about this. आप सोचिए आपकी क्लास इंटरप्ट हुई, फिर many people will say why do you answer such questions? So यार, मैंने फिर कहा ना, that is where I'm saying this is a subject जिसको कोचिंग्स में सिर्फ डिक्टेशन में पढ़ाया गया. एंड आज भी वो कोचिंग्स कह रहे हैं हमारे नोट से पास होता है. समझा रहे हैं, रिक्वायर समथिंग. आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, मैं ही तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से क्वेश्चन. यू टेल मी. एम आई नॉट इंटरेक्टिंग? बिकॉज आई नो यू डोंट हैव टू. ये अब सोचिए तो सही, इसको मगअप करना कितना मुश्किल है. और कोचिंग से अपने नोट्स को ऐसे कहा है कि हमने चैट जीपीटी से अपने नोट्स बनाए. अबे यार, चैट जीपीटी से नोट्स बना रहे हो तो क्या नोट्स बना रहे हो? ट्रू और नॉट? आई डोंट इवन नो कि वेयर वी आर लुकिंग एट. ठीक है. So let's come to this. This is what we have understood, and we are doing a much better job. बहुत बार like for almost a year I did not offer optional on online, because if you have to give all that quality delivery, it will take time and it will do that. And इतने बड़े ऑडियंस को आप ऑनलाइन कैसे दे रहे हो? एंड आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन. Seriously, like 5-7 years down the line, I may not be here teaching also. I will be creating some new things. As long as I'm doing it with all love and passion. Don't make fun of it. I have a request for that. Okay, चलिए आफ्टर पैसेज चलते. What is after passage? पैसेज के बाद क्या होगा? Now your aeroplane, you can see two things. Your aeroplane has reached from A to B and अब B से C में आ गया. अब कैसा लग रहा है? So where are we? How's the temperature? Quickly. So we are in the warm air. So ये warm temperature हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद how's the pressure? Pressure. Generally warm पे तो लो ही रहता है. Is low pressure रहता है. Falls to the lowest, no doubt about that. तो थोड़ा सा increase होगा, slight increase. Can I say slight increase will be there? But it will stay low only. That I agree. क्लाउड्स क्या है? इधर कोई क्लाउड्स बनता है? मोस्टली तो क्लाउड्स आर ऑन द फ्रंट. इधर कुछ हो गया कन्वेक्टिव एक्टिविटी की वजह से, सम कन्वेक्टिव क्लाउड्स पॉसिबल और नॉट? सो फ्रंट वाले तो नहीं है भाई, फ्रंट वाले तो नहीं है, बट सम कन्वेक्टिव क्लाउड्स आर वेरी मच पॉसिबल. दैट वी आर लुकिंग एट दिस. दिस इज देयर. And precipitation will be low to moderate depending upon humidity. Everyone, can you do this? दो फ्रंट हो गए आपके, कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट, एंड द वेदर एसोसिएटेड विद इट. यू हैव ऑल द इक्विपमेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि एक फ्रंट क्या होता है. अगेन टेलिंग यू, फ्रंट को ऐसा मत सोचे छोटी सी चीज है. सर, व्हाट विल बी द फ्रंट ऑन पटना, व्हाट विल बी द फ्रंट ऑन
Ratnagiri. So that is not the case. I hope you understood. That's why I made the map also. That front is a huge, huge zone, hundreds of thousands of kilometers at the interface of two contrasting air masses. Everyone with me on this? And whenever I read this, because we were told this, we were trained into, looking at the fronts, how do we manage them out on ship. When I looked at this, मुझे समझ में नहीं आता है क्या करते हैं. Humidity dropping low, particularly in winter. This is the warm front ना. Warm front क्या है? After passage देखें warm है. None occasionally showers in summers, because in summer convective activity will happen. Clearing will happen because clouds will go. So that's there. Some cumulus, cumulonimbus. That too in summer. Remember, summer convective activity will happen. Falling, then rising. Remember, पहले तो fall हो जाएगा. उसके बाद एकदम lowest के बाद it will rise slightly. I hope you can understand why they are writing falling then rising slightly. So it is low after that slight rise, and high, particularly in summer. Humidity will also depend on that. वही same चीज आ जाएगा. Low to moderate depends on season. Stays low after slight rise. Can I say that? After falling to the lowest, that's it. And I have deliberately given a lot of time to this. क्योंकि इसके बाद वाला जो front है, उस front का weather is a complex weather, and there we write something else. So this is convective rising. यहाँ पर क्या लिख देना? Convective rising in summer. अगर ये आप लिख दोगे तो आपका बहुत सारा सॉर्ट हो जाता है. Do we get that? Occluded front. First of all, it involves three air masses and two fronts. Okay? It involves three air masses and two fronts. That's first thing about occluded front. It marks the process of frontolysis. Occlusion refers to the dissolution of fronts after occlusion. The contrast between air masses reduce. So when the air masses में जो contrast है, when it reduce, so will it be called as frontolysis only? Yes, it is like frontolysis. In this cold front displaces the intervening warm sector completely to catch up and overtake the warm front. Many GS students read such statements and they come to me, Sachin sir, I read the booklet and I did not understand किसने किसको पकड़ लिया, catching up क्या है, overtake क्या है, I don't understand this. So I tell them this is not for GS students. This is only for optional students, and I'm writing this. When I write this, mostly we don't understand what is happening in this. When I show this to my students, that's the point where they will start understanding things. So let us catch this with us.
I have a cold air mass, a cold air mass in which cold air is coming. Yes, cold air is coming this side. I have a warm air. I have a warm air which is pushing a cool air here. Okay. I have now two fronts, A and B. Can you tell me the three air masses? What are the three air masses on the screen in the diagram? What are the three air masses? The cold air mass is one. One is the cold air mass. This is the warm air mass. This is the cool air mass. Three air masses are there. Three air masses are there. Do we get that? And how many fronts are there? Two fronts, A and B. What is the name of the front A? Front A. What is front A and what is front B? What type of a front is front A and what type of a front is front B? A is cold front. How can you say A is cold front? Why can't A be a warm front? What makes you people say that A is a cold front? What makes you people say that A is a cold front? B is a warm front. What makes you say that? What makes you say that? Avinash, I told you that it is the aggressor. If I had not told you people that it is the aggressor. See, that is why we keep the chat on. So that you people can think and make mistakes. Mayank is saying cold is the aggressor. Who told you cold is the aggressor? Who told you cold is the aggressor? I told you. If I don't tell you, if I just tell you there are three air masses, how would you know which is the cold front, which is the warm front? How would you know which is the cold front, which is the warm front? ये देखो अभी सही बोलने लगा है. आयुष सेट सर स्लोप ऑफ द फ्रंट, शेप ऑफ द फ्रंट. इसी देर से इतनी देर से पढ़ा क्यों रहे हैं? अभिनव से स्लोप. शक्ल देखते ही पता चलना चाहिए. कोल्ड पुशिंग वार्म एंड वार्म पुशिंग कूल. आजाद सिंह, दैट आई टोल्ड यू. I told you. If I don't tell you who's the aggressor, from looking at the diagram, can you catch it or not? इसलिए बताया था वो. Do you get that? So thank you for participating in this exercise. Now everyone, which front moves faster on ground? Which front moves faster on ground? Which front moves faster on ground? सर कोल्ड ज्यादा तेज चलता है तो एवरीवन दे मूव. Please pay attention. Everyone, please pay attention. Cold has moved to this place. Cold has moved to this place. पहले इतना था. First it was here. Now it has moved to this place. Okay. And cool has also, the warm front has also moved, but warm front moved, which was here, has also moved and it is here. Can you see warm front moved only a little bit? And in the third situation, what happens is warm front, which was here, has now reached here.
But cold front everyone has reached here. First it was here, then it was here. Everyone, can you see cold front moves faster? Cold front moves faster. A dash, B dash, A double dash, B double dash. Cold front displaces the warm sector completely and catches up, overtake the warm front. Can you see from the diagram? Can you see from the diagram? So what happened to the warm air? What happened to the warm air? Now what is left on the surface? Surface पर क्या रह गया है? Cold and cool. Has warm air totally been lifted up? Yes or no? As it is, warm air was being forced to rise here also and forced to rise here also. तब भी हो रहा था. Yes or no? दोनों ही तरफ हो रहा होगा कि नहीं हो रहा? इधर क्या हो रहा है? इधर एवरीवन, आई होप यू कैन रिमेंबर, इधर क्या हो रहा है? ये क्लाउड. इधर क्या बन रहा है? बैटरी ऑफ क्लाउड्स बन रहा था. True or not? Eventually what has happened? Entire thing has been lifted up. नीचे क्या रह गया? Cool and cold. Everyone please read it now what we have written and the diagram. Do you see what is an occluded front? Occluded front is when this happens और वो उसको पकड़ लेता है. That these are the bullets which I have written to you. If it is understood, please write done. This is the squall line. Now you know what is the squall line. You can see. Can you see this? नीचे क्या रह गया? Cold and cool only, and the warm air is lifted up. Cold air reaching and this thing. So this is where I say, three-dimensional video can help us imagine better. But our diagram, because there we will be making it, so we have our cold front and the warm front, and the cold air is overtaking that one. Are we clear? Cold front normally moves along the ground at a faster rate than warm front. The cold front overtakes the warm front and occluded front results from that. The colder air of the fast moving cold front remains next to the ground, forcing both the warm air and less cold air to rise above. The warm air mass is lifted completely free from the ground. This is what is in the books, this is what is in it, and this is what you have drawn. Okay. So now Shivi is saying, sir, पहले समझ नहीं आया था overtake and frontolysis कैसे हो गया? Now clear. अभी frontolysis भी सिखाता हूँ. I'm not done with this. First of all, the concept should have been clear. Is everyone okay with the concept clarity? And why do I make diagram and write this? Some of you can think, Sachin sir, आप सिर्फ समझा दीजिए. In the exam लिखना भी तो पड़ेगा. And if you are not having a control on your language, you might end up writing a lot. अब तो जो भी लिखा है दिखा भी दिया, ये भी कर दिया, ready है, ready to work. Now let me take it to the next step.
Occlusion can be of two types. Cold front occlusion and warm front occlusion, both of them will be shown to you in diagram. पहले diagram बनाते हैं, फिर इनको एक एक करके समझना शुरू करेंगे. Please draw them and then we will understand. When it's done, please write done. Okay. So everyone, let us look at the cold front occlusion. This is the case. This is the case of cold front occlusion. The air here is 8 degrees Celsius, in between 20 degrees Celsius, and here is 12 degrees Celsius. Did you see the cold front and the warm front? Now the cold front has caught up with this. We have come to this. Will it stop or will it continue? So when we have stage 1, 2, 3, 4, stage 1, 2, 3. 3 stages have come, yes or no? Can I say this will continue
And the cold and cool will now be the two air masses which are going to interact. True or not? Now tell me, out of 8 and 12, which one is colder? Which one is colder? Stage 4, which one is colder? So stage 4 is this. Sir, 8 degrees Celsius is colder, so it will stay close to the ground. Yes or no? And there was a front like this. This front was there, the warm front was there. So what will it do? It will move further and force this warm 12 also to rise. Yes or no? 20 तो हो ही गया. Can I say this much part which it had occupied, this much part will be eaten or not? This much part, will it be eaten or not? So if the air which is pushing is colder, if the air which is pushing is colder at the occlusion, that will stay close to the ground and force the warmer air to rise up. Since the fronts are named after the driver, who's the driver here? Cold air is the driver. This is called cold front occlusion. Cold front gained an upper hand. Is everyone with me on this? Are you clear? Get that? ये हमारा stage 4 हो गया. अब stage 4, let us talk about Shivi. Shivi was talking about, sir, frontolysis पहले समझ में नहीं आता था. Everyone, let us look at the temperature readings. Please look at the temperature contrast. The temperature contrasts were 8, 20 and 12. Lot of contrast on the ground or not? Yes or no? What is the temperature contrast here? 8, 12, and at this dot we will have 20. But can you see now? Mostly 8, 8, 12, 12. But because this is being eaten up, can I say this area will be 10, 10, 10, 10? Have the temperature contrast reduced or not? Everyone? That is why we say occlusion brings frontolysis. पहले सोच के देखो, very clear contrast was the 8, 12, 20. But now what is happening is on the ground, as you are eating it up, can you see this has also become widened? 10 वाला zone ज़्यादा होता जा रहा है. Soon what will happen? The average of 12 plus 8 by 2, सब कुछ 10 हो जाएगा. सब कुछ 10 हो जाएगा. That is why we said that यहाँ पर हमने लिखा है, it marks the process of frontolysis. Front is getting dissolved. I hope you got that idea also. Is everyone with me on this? Is everyone with me on this? Okay. And I want you to actually practically get a hang of things. That is why I'm doing this. Okay. What air mass is this? What air mass is this? Where I put a question mark. What air mass is this? Everyone, you will understand. So whatever your background, please just apply the basics. What air mass is this? Maritime? Tropical? 20 degrees Celsius. What air mass is this? Maritime? Polar? 12 degrees Celsius. What front is this? What front is this?
What front is this? This is a warm front. Warm is trying to do that. True or not? Okay. What air mass is this? What air mass is this? The continental polar. True or not? This continental polar decides to come in contact with maritime tropical. What will it create? What will it create? Will it create this or not? Will it create this or not? What front is this? Cold front. What temperature is this? With me on this? How many air masses? 3 air masses. How many air masses? 3 air masses. How many fronts? 2 fronts. What is the difference between these two diagrams? This is a side view. This is theory. This is theory. This is a top view, practical. When I am on ships, my ship is here. I am looking at a warm front is approaching me. I am looking at advanced weather, passage weather, everything will happen. Yes or no? Now if this, अभी तो ये front है. What is occlusion? Occlusion means that with time, this one will catch up with, ये धीरे चलेगा, this one will catch up. So entire thing will become CP, ये, and the warm air is removed. Everyone, did you see heat exchange happening? Did you see heat exchange happening? सर ये समझ में नहीं आया heat exchange कैसे हुआ? Remember CP is going to enter like this. Is the CP coming to the cold air coming to the lower latitudes? और ये जो warm air है जो उठ गई है, ये warm air was, where was it being pushed? So warm and cold, remember heat exchange, heat budget of earth is being formed where occlusion happens. Occlusion and this frontal thing happens. Is everyone okay? I hope you understood how they are catching up. इधर ज़्यादा तेजी से मूव करता है, ये थोड़ा धीरे धीरे मूव करता है और वो उसको कैच अप कर लेगा. Everyone, do you understand what is occlusion now? Occlusion in real world, fronts in real world. अब ये आई होप दैट आइडिया विल नॉट कम चंडीगढ़ और चेन्नई का फ्रंट, वहाँ फ्रंट नहीं होता, फ्रंट पूरे एरिया में आता है भाई. इट कैन नॉट बी अ सिटी. ट्रू और नॉट? डिड वी अंडरस्टैंड कोल्ड फ्रंट ऑक्लूजन? अगर पीछे से कोल्ड फ्रंट आ रहा है एंड आगे वार्म फ्रंट है एंड कोल्ड फ्रंट इज द ड्राइवर, हु इज द ड्राइवर? कोल्ड फ्रंट इज द ड्राइवर, so that occlusion will be this. But there are cases in which the air in the cold front was 12 degrees Celsius and air in the warm front का जो ahead था that was 8. When these two collide, now tell me that 12 degree air, though it was a cold front, but अब इसको तो नहीं हटा सकता ना 8 को. Will it be forced to rise up this time? Yes or no? And that much part of it will be destroyed because this will not move. This is called a warm front occlusion because, can I say, relatively warm air was pushing here. Do you understand what is a warm front occlusion? Occlusion में तो
Yes, a cold front will strike with a warm front, but in the cold front, what is the temperature of the air? If in the cold front the temperature of air is the coldest, if it is coldest, then we will have a cold front occlusion. But if the cold front had air which was relatively warmer, coldest इधर है, तब वो रूल विल रिमेन द सेम, इसको ऊपर उठाएगा. Everyone, are we clear? Did we understand occlusion? Did we understand the diagram of occlusion? Did we understand where in the world occlusion happens? Where in the world occlusion happens? If they ask you the weather associated with an occluded front. What will you write? It is a complex combination of weather associated with warm and cold fronts on either side of occluded front. Remember, on one side there is cold front, on other side there is warm front. So उन दोनों का combination बन जाएगा आपका. Everyone with me? Are we clear? फिर समझ में नहीं आया दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे, फिर से दिखा देता हूँ. इस तरफ कौन सा है कोल्ड फ्रंट का वेदर, इस तरफ कौन सा है वार्म फ्रंट का वेदर. रिमेंबर, दिस इज वार्म फ्रंट वेदर, दिस इज कोल्ड फ्रंट वेदर. दोनों का कॉम्बो हो जाएगा कि नहीं. One side is cold front weather, other is this thing. So it's a complex mix of both the sides. So we do not show the weather of occluded just like that. It is like this. With this, we end the weather associated with different fronts. So stationary front का आपने weather नहीं बताया. Stationary front में none of the air mass is trying to enter into the other's territory. Rather, the air just moves parallelly to each other. Did you also get a connection between latitudinal heat exchange, occlusion brings frontolysis as well as latitudinal heat exchange? These are the concepts which you must keep in mind. So announcement, tomorrow is a special class. It's a doubt class and a map drawing class for people who have not attended our GS classes. So people who are in GS batches, you need not come for that. If you had attended before also, that's also okay. If you are a new student, come to that. We'll also send a message for that. Do not be unnecessarily be alarmed कि अरे कोई special class है, उनके लिए class. Second thing is, though there is something happening at the border of Delhi and Noida, but I will be going for the class. So today I'll be giving a strategy class for the GS people. Strategy class for the GS people at 2 o'clock. So people who are in our GS batch, who are in our current English medium GS batches, all of them will be relayed today. So I will be taking a strategy discussion on that also. We are left with jet streams. Shivi is asking what will be the time. Time will be the same, 9 to probably 10, 10:30. It will be a shorter session. It will be a shorter session. 9 to 10:30, that will be the time. If you have specific doubts, please bring those doubts about whatever your somebody asked about schedule and all. So generally class का flow टूट जाता है and जो topic है उससे हम हट जाते हैं. So it is better that we keep those classes as separate classes. Do we get that? So all the offline students, I'll see you in the offline class. Rest doubt session for students for doubt session, I'll see you tomorrow. Other students, I'll see you day after tomorrow. I plan to do jet streams, but as I said, front is something which we must understand, and this will also help us understand the
cyclones. So cyclones bhi aayenge. Cyclones are in advanced climatology, where I will again use this idea of front. Please keep this very, very handy. Please understand this, otherwise the process will not work for you. Climatology, geomorphology, these classes, these lectures are linked. That is why we first give you the basic ones. After this, I'm going into a human geography. Human geography will see whether we are doing it on Thursday or not. Sir, we also need strategy class for prelims. Avnen is talking about that, Avnendra. So I did announce that for optional, we'll do at some other opportune time. Okay, that we will do that. Don't worry. Thank you. Have a great day. Jai Hind.